Now I will start terminating and non-terminating decimals. So what is terminating? जो terminate होता है, the number which can be terminated. Non-terminating, the number which cannot be terminated. For example, if we divide 10 by 3, what do you get? 3 3 the 9. Why? 0.0. 3 3 the 9. Again 3 3 the 9, and so on. It goes like that. That means 3.33333 up to infinity. It doesn't terminate. So this is called non-terminating. Non-terminating decimals. And in short, we can write it like 3.3 bar. Bar means it is repeated again and again. यानी ऐसा नंबर जिसको हम किसी नंबर से डिवाइड करें, कोई नंबर बार बार आता जाए तो उसको हम बार से रिप्रेजेंट कर देते हैं. बार का मतलब बार बार आता रहेगा और ये टर्मिनेट नहीं होगा. अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है यानी खत्म नहीं होता है, डिवाइड होता ही चला जाता है, देन इट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 3.3 बार लाइक दैट. Or suppose 2.777 and so on is represented by 2.7 bar. So this part is getting repeated and 2 is not repeating. So this is mixed decimal. One part is non-terminating and one part is simple digit. So this was non-terminating, and the terminating is very common phenomena which you might have seen several times when you divide something with some number, except 2 and 5. If you get a denominator of this form, 2 to the power n into 5 to the power n, if the denominator is this type, then it will be terminating. For example, 53 divided by 2 into 5. So this is equal to 53 divided by 10. And when you divide any number by 10, it will be in this form. That means one point will be inserted after first place from the right. And if you divide 53 by 2 into 2 into 5 into 5, this will be 53 divided by 100. So this will be equal to 0.53. So these type of decimals are terminating, and whenever you have 2 and 5 as factors of the denominator, it will always be terminating. हमेशा terminate हो जाएगा. गारंटी है इस बात की कि अगर 2 और 5 है तो ये लंबा नहीं चलेगा, ये खत्म हो जाएगा. तो ये हुई बात टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. अब सवाल यह है कि ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है इन्हें फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाए. फॉर एग्जांपल 0.3 बार. हाउ कैन वी सॉल्व इट एंड फाइंड ए फ्रैक्शन फॉर दिस वैल्यू. तो अगर इस नंबर को हमें फ्रैक्शन में बदलना है तो कैसे किया जाएगा. सो you know that this is equal to 0.3333 and so on.
If you put it like this, 3, 3 bar, again it is same. That means 3 is repeated and before that is also 3. So it doesn't matter whether you write it like that or like that or like that. All are same. So you can assume that this is x. Now multiply this number by 10. That means this number and this number. 10 into x is equal to 10 into 0.33 bar. This was your first equation and this is your second equation. So this is equal to 10x is equal to 3.3 bar. Now you can take this equation as 2 because this is in a solved form. Now subtracting equation 1 from equation 2. You will get 10x minus x is equal to 3.3 bar minus 0.3 bar. So 10x minus x is equal to 9x, and after point we have same number, so you get 0 after the point. 3 minus 0, 3. So x is equal to 3 upon 9, which can be reduced to 1 upon 3. So when we divide 1 by 3, we will get this number. So this is the solution to find a fraction in place of a decimal number, where the digit is being repeated infinite. So this is the procedure. Suppose we get another number where two numbers are repeated, then what will be the procedure? Just see. After that you can generalize the procedure. Suppose you take 0.35 and this is repeated. So x is equal to this much, and this can be written as 0.35, 35, 35 and so on. So what is the difference in this case? There are two numbers which are repeated infinitely. So this is your first equation. Now in this case we will multiply by 100. So 100 into x is equal to 100 into 0.3535 bar. I am not repeating all these numbers because this is same. 35 bar is same as 0.35 बार. यानी अगर हम खाली बार 35 पे लगाएं या इसके बाद आने वाले किसी दो नंबर पे लगा दें एक ही बार, अगर वो सेम नंबर्स हैं, यानी इसका मतलब भी वही है कि 35 35 35 रिपीट होता चला जाएगा. इसका मतलब भी यही है कि पॉइंट के बाद 35 35 35 रिपीट होता चला जाएगा. तो दिस कैन बी रिड्यूस्ड टू 100x is equal to 35.35 बार. देखिए तरीका यह है कि जब हम 10 या इसके मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हैं किसी डेसिमल नंबर को, तो जितने जीरो होते हैं उतने ही डिजिट पॉइंट राइट हैंड साइड में खिसक जाता है. तो ये यहां था, यहां से दो डिजिट के बाद यहां आ गया, यहां से यहां आ गया. When we multiply any number by 100, the point moves right. If it has 2 0, it will move 2 places to the right. So this is equation number
देखिए एक के बाद जितने जीरो है, अगर ऐसे किसी नंबर से किसी पॉइंट वाले नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो जो पॉइंट है वो अपने प्लेस से सीधी तरफ जितने जीरो हैं उतने ही डिजिट सीधी तरफ चला जाएगा। नाउ subtracting equation 1 from equation 2, you will get 100x minus x is equal to 35.35 bar minus 0.35 bar. We have same numbers after the decimal, so after the decimal the result will be 0, and 35 minus 0, 35, and left side 100 minus 1, 99. So 99x is equal to this much. So x is equal to 35 upon 99. So this is the fraction which will give the same result, right? So this is the procedure to find a fraction in place of a decimal number where any digit is repeated infinitely. तो किसी भी नंबर पे अगर बार लगा हुआ है यानी वो बार बार रिपीट हो रहा है, उसको फ्रैक्शन में बदलने का ये तरीका है। जब देखिए एक नंबर रिपीट हो रहा था हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था, जब दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, जब 3 रिपीट होंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 रिपीट होंगे तो 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड सो ऑन. So this is the procedure to handle this kind of numbers. So these are non-terminating, repeating. We can also use recurring for this form. Recurring and repeating. Both words are used for the same purpose, repeating and recurring. दोनों का मतलब यही है कि कोई चीज बार बार आ रही है, रिपीट हो रही है, दोबारा आ रही है. कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिसमें रिपीट नहीं होता लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होता है. नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. ये तो था नॉन टर्मिनेटिंग. अब नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग अगर नहीं है तो ऐसे नंबर्स कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर. हमने पहले भी जिक्र किया है इर्रेशनल नंबर्स का. सो द डेसिमल्स which are of the form 0.01001, 00001, 00001, and so on. In this case, you can't change it into the form of fraction because this will be an irrational number. So non-terminating, non-repeating numbers are irrational numbers. And irrational numbers are those numbers which are non-terminating, non-repeating या non-recurring. न तो डिवाइड करने पे डिवीजन खत्म होता है, न सेम नंबर दोबारा आता जाता है. ऐसे केस में ये नंबर इर्रेशनल नंबर हो जाता है. नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर्स आर कॉल्ड इर्रेशनल numbers and they cannot be changed into fraction form. They are always in the form under root 2, under root 3, under root 5 and so on. So
So these were the decimal numbers which are related to fractions. Okay, thank you.